चलो, let's get started to the next question. So the next question is very easy. I'm not going to code it. इस क्वेश्चन को अपन कोड नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को अपन बस समझेंगे. It's called medium level, but it's not. Okay. So you have an n cross n matrix. You have an n cross n matrix as an input. It can be 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. You have to rotate this matrix by 90 degrees. Sorry. When I say rotate this, then what will happen is ये जो rows आप देख रहे हैं ये columns में convert हो जाएंगी. ठीक है, अपने को ऐसे flip करना है. ठीक है, तो this 1, 2, 3 will come at last. 4, 5, 6 will come here, and 7, 8, 9 will come here. Okay, चलिए जी, ये question clear है? इस क्वेश्चन को बस डिस्कस करेंगे, इसका कोड नहीं करने वाला, बहुत इजी कोड है. मतलब एक बार तुम्हें पता चल जाए तो बहुत इजी है, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगता है. ठीक है, तो अपने को चाहिए क्या? लेट्स अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स. ओके, दिस पर्टिकुलर पीस शुड कम एट दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट, एंड दिस पर्टिकुलर एलिमेंट शुड कम एट दिस इंडेक्स. This should come here and this should come here. Correct? ऐसे move हुआ ना. उसके बाद if I think about 2, if 2 is here, this 2 will come at the place of 6. The 6 will come at the place of 8. See, and this 8 will come at the place of 4. And this 4 will come at the place of 2. Correct? ऐसे कुछ चल रहा है ना. Directly हो सकता है. Correct? You guys are right about that. I'm just giving an example कि ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. ठीक है? So as you can see, मैं चार एलिमेंट्स को ऐसे मूव कर रहा हूँ एक टाइम पे. ठीक है? तो this can be a solution. अच्छा, इस तरह इसको देखते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16. This 1 will come at the position of 4, 4 will come at the position of 16, 16 will come at the position of 13, and 13 will go to the position of 1. Once this is done, next part, this 2 will come at the position of 8, 8 will go at the position of 15, 15 will go at the position of 9, and 9 will go at the position of 2. Similarly, last is this 3, 12, 14, 5. Once this, ये एक बारी outer ring complete हो गया. Once this outer ring is done, let's jump to inner circle, which is 6, 7, 10, 11. What color is that? Again, same cheese. 6, 7. Let's try to solve it using transpose. Very easy method. ठीक है, let's think about first taking a transpose about this principal diagonal. If I take the transpose along this principal diagonal, how is it going to look like? 1, 5, 9, 4 and 2 replaced, 7 and 3 replaced, 6 and 8 replaced. Okay, so this is how your input is going to look like right now. अब अपना आउटपुट क्या होना चाहिए था? अपना आउटपुट होना चाहिए था ये वाला जो ये वाला जो रो है वो इधर आ जाए. ठीक है, वो 1, 2, 3 लास्ट में आ जाए. ठीक है, बट राइट नाउ इट्स नॉट लाइक दैट. व्हाट हैपेंड? डिड आई चेंज इट? वेट, आई डिड नॉट मूव इट. आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड. ओके, ठीक है. तो but this row is in right, this row has become a column, but it's coming at the front, so you have to replace the rows as well. Now swap the rows one by one. Okay, so just swap these rows and swap this row with itself and your work is done. So this will become 7, 8, 9, 4, 5, 6 and 1, 2, 3. ठीक है, इसका कोड हो जाएगा